In the last lecture we have seen what is a subsets. ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सबसेट में ही, तो वो चीज हम लोग देखने वाले हैं. So first we will see that if there is a set that has n number of element that we have seen in the previous class, that if a set that has n number of element, okay, let's say set A has p number of element. We have seen this. Let's say set A has p number of element. So total number of subset will be 2 power p. ठीक है, ये हम लोग देखे थे पिछले पिछले क्लास में. यहीं पे है that if number of element in the set is p, okay, then number of subset will be 2 power p. So if let's take an example. अगर सेट में लेट्स से सेट में 3 एलिमेंट है, सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, एंड नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 पावर 3. ये रहेगा नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 पावर 3 विल बी 8. ठीक है, सो अगर सेट में 3 ही एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट विल बी 8. So 8 number of subset can be formed, okay, not more than that. Not total number of subset will be 8, not more than that. Okay, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले ये छोटा सा एग्जांपल था. नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ये इम्प्रॉपर सेट क्या होता है. ओके, हम लोग देखने वाले हैं इम्प्रॉपर सेट क्या होता है. सो लेट्स फॉर नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल. सो इस एग्जांपल में हम लोगों ने एक सेट लिया था, सेट से जिसके अंदर 4 एलिमेंट था. ओके, नाउ व्हेन देयर वर 4 एलिमेंट्स इन द सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वी हैव ऑब्टेन्ड इज 2 power 4, that is 16 number of subsets we have obtained. Okay, 16 number of subsets we have obtained. So if number of element in the set is 4, how many? 4 number of element in the set. So if there are only 4 number of element in the set, then total number of subset will be 16. Okay, और ये कैसे आता है? ये आता है इस फॉर्मूला से, 2 power p वाला फॉर्मूला से आता है. So number of element 4, if you put 4 in place of p, we will get 2 power 4, that is 16. Okay, 16. सो अब हम लोग टाइप ऑफ सबसेट पढ़ने वाले हैं, किस तरह का सबसेट्स होता है. नाउ यहाँ पे देखने पर हम लोग समझ में आता है कि अम, ये जो सेट है ये सारा सबसेट है इसका. ये सारा जो है ये सबसेट है, ये सेट का सबसेट है ये सारा. नाउ सी दिस सेट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस सेट. ओके, this set that contains, this is also a subset of this set. No, so this set also contains all the elements as same as the original set. So this is the subset of this set, and which is also equal set. This set is the subset of this set and also are equal sets. So this subset is called improper subset. What is it called? It is called improper subset. Okay, it is called improper subset. Improper subset. Okay, this alone set is called improper subset. So every set will have only one improper set. Okay, if you see this example, it has only 3 elements. इसमें कितना 3 एलिमेंट है, बट हम लोगों ने कितना सबसेट निकाला? हम लोगों ने 8 सबसेट निकाले. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वेर 8. सो इन दिस ऑल्सो इफ यू सी, यहाँ पे जो ये जो सबसेट है, ये सबसेट ये क्या है? एक सेट है जो इसका सबसेट है. ओके, जो इसका सबसेट है. ओके, ये एक सेट है जो इसका सबसेट है, बट दिस सेट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस सेट. ये सबसेट भी है और ये इक्वल भी है. सो इन दिस इन दिस ऑल द सबसेट्स, ये जो सारा सबसेट्स है इसके अंदर में ये जो है ये क्या है? ये इम्प्रॉपर सबसेट है. ओके, सो इसको हम लोग बोल देंगे इम्प्रॉपर सबसेट. इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट. So every set will have one improper subset. Okay, that is the subset which is equal to that original set. Okay, everywhere there will be at least not there will be one improper subset. If you see this condition,
This is another example in which these were the subsets. Okay. Among those, this is a set which is equal to this set. Okay. So this is a subset of this set, specifically called improper subset. So हम लोग यहीं से हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं that a set which is a subset of any set and also equal to that set is called an improper subset. Okay. So how will we write that? Now, if A is the subset of B, if A is the subset of B and A is equals to B, then so first we have taken example that if A is a subset of B and A is equals to B, in that case we will say that A is improper subset. What is A? A is improper subset. Now if you find A is a subset of B, but A is not equal to B. What I have said, A is a subset of B. Suppose A is a subset of B and A is not equal to B. Then A is a proper subset. Then A is a proper subset. Okay. This is the condition. So हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि कब कब हम लोग कौन सा सबसेट को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे ये डिस्कस कर लिया है ठीक है सो वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट this this set is the improper subset okay among all these subsets इसको छोड़ के जो भी है इसको छोड़ के जो भी है यहाँ पे जितना भी सबसेट्स है इसको छोड़ के ये सारे सबसेट्स को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं ठीक है ये सारे सबसेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं ओके सो इन दिस एग्जांपल इन दिस एग्जांपल दिस इज द इम्प्रॉपर सबसेट इसको छोड़ के जो भी सबसेट्स है ये जो भी सबसेट है ये सारे सबसेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं ओके नो similarly for this example this is the improper subset. So except this, others will be called as a proper subset. Okay, this is the main differentiator between improper subset and proper subset. Okay, so I hope समझ आ गया रहेगी improper subset क्या होता है proper subset क्या होता है नेक्स्ट हम लोग सिंपल से देखने वाले हैं कि empty subset क्या होता है empty subset क्या होता है empty subset basically among all the subset which subset do not have any element that is this one. Okay, so empty subset will be also equal to 1. Okay, for every case empty subset is also equal to 1. Every subset will have one empty subset. Okay, so we will formulate this that how to find out how to find out improper subsets. So improper subsets will be equals to number of improper subset will be equals to total number of number of improper subset will be always 1 because for every set we will have one improper subset. For every set we will have one improper subset. Okay, next we will uh, write the formula for proper subsets. Proper subset. Okay, now total number of subset is 2 power p. Total number of subset is 2 power p. 2 power p. P is the number of element in the set. P is the number of element in the set. So total number of subsets we will have 2 power p. Okay, and if we remove 1, because what is 1? 1 is the number of improper subsets. Total number of subsets are 2 power p. 1 is the number of improper subset. If we remove improper subset, the remaining subsets are the proper subsets. Okay. So total number of proper subsets will be 2 power p minus 1. Next, similarly, we can write number of empty subset. Number of empty subset that will be also 1, and number of non-empty subset
non-empty subset. So one empty subset we will remove from total. Okay, total number of subset minus empty subset will be total number of non-empty subsets. Okay, this is how we find out number of proper subset, number of improper subset, number of empty subset, and number of non-empty subset. Okay, so in the next video we will see water intervals. So water we will see in the next video water intervals. Okay, so this is for the video.